Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that Nifty again opened with a gap up, and it has closed at 18,145 levels. So overall, the Nifty traded with positive bias, and mainly the metal, pharma, and IT sectors, followed by IT and realty, were the leaders, which took the Nifty up. Whereas banking was the only one sector where we saw some pressure, and it was more of a like sideways consolidation in the banking stocks. So what we are seeing technically, the Nifty is looking positive. So it is at above 18,000. We are targeting 18,400, 18,500 on the higher side. So it is a positive view. Just in case if the profit booking comes, then on the lower side, 18,000 will act as a support. That is the view for the Nifty. On the higher side, the all-time high for the Nifty is 18,600. Whenever we believe in the next couple of weeks, this level will be taken the higher side. So we have a positive buy for the Nifty specific. Coming to Bank Nifty, what we are observing for the last 5-6 days, it is not able to cross for 41,500. Mainly from the derivatives point also, 41,500 is the level where most of the call writings are seen. So that is acting as a resistance. And additionally, tomorrow there is a RBI policy. So some amount of profit booking is also seen in the Bank Nifty. Having said this, the lowest at 40,800 is the supports for the Bank Nifty. So on any corrections closer to this level, again the Bank Nifty will see the supports over there. However, what we saw yesterday was the stocks like Axis Bank, Bandhan Bank, or Bank of Baroda, and even to some extent ICICI Bank. These were the stocks which were seeing the selling pressure, and which is why the Bank Nifty also saw the profit booking. On the positive side, the AU Bank and HDFC Bank and IndusInd Bank. These are the three banks which showed strength, which gave support to the Bank Nifty. So overall, the buyers for the Bank Nifty is also bullish, but some extent there can be correction. So 41,000 might be broken on an intra-week time frame. So 40,800 remains a support for the Bank Nifty. On the higher side, 41,500. So whenever 41,500 is taken up, we will have a fresh momentum on the higher side. So for both the indexes, we have a positive view. Any decline should be viewed for the buying opportunity. Coming to derivatives data, so Nifty futures have added a long positions to the tune of 4.5%, which was an addition of 5.8 lakh shares. The put call ratio saw a little bit of decline to minus 1.17%. So previously it was 1.32, now it has come to 1.31. So, but the overall, as long as the PCR is above 1, it's in a strong, in a buying zone. Coming to the additions, the call option the major additions in the call option was seen at 18,400 strike plus to the tune of 67.69 million shares, and then 18,200 call option at 65.08 million shares. While on the put option front, the major additions were seen at 18,000 strike plus at 76.42 million shares. So basically 18,000 will act as a support. Coming to Bank Nifty has seen a short built up to the tune of 2.34%, which was the addition of 20.8 lakh shares. The major additions in call option was seen at 41,500 call plus at 43.77 million shares, and then 41,300 call option at 16.88 million shares. On the put option front, 41,000 put option is seen a major additions by 18.24 million shares. So 41,000 should act as a support for the Bank Nifty. The top three long build-ups seen in yesterday's session were Alchem, Britannia, and Torrent Pharma, and the short build-ups were seen in M&M Finance, Axis, and Intellect. So after this, we come into FI data. So FIs overall in cash, they were long by 2,600 crores, and DI are they are shorted. They sold 730 crores. Whereas if you look at the FIs derivatives data, index future data, they have went long by 377 contracts, 11,377 contracts, and overall they are net long by 45,000 contracts. And this long short ratio, they are long by 66% in the index future, which suggests that they are bullish on the market. So overall sentiment is positive from the derivative
from the FIS point of view also. So we have a positive view on the market. A decline should be viewed as a buying opportunity. So that's all from my end. Over to Bhavesh sir for more updates. Thank you. Yeah, good morning all. So starting with auto numbers that came out. So overall, auto industry witnessed mixed performance, but passenger vehicles reported recovery. This is because of easing of semiconductor supplies, and also domestic demand has improved. The domestic two-wheeler market continues to exhibit weakness, and but CV segment again was we have seen good growth because of on lower base. Overall, our topic remains M&M, iShare, and SJS Enterprise in auto. Especially M&M is well positioned to turn around to address the turnaround in Indian PV passenger vehicle market. Then coming to results, first Tech Mahindra. So Tech Mahindra reported 3% QOQ growth to 13,000 crores, but profit grew by 13% sequentially to nearly 1,300 crores. So decent result, but and we had a buy rating, but recently now we have just kind of downgraded the stock to a hold. Then Chola Finance. Chola Finance reported very strong results. AUM growth was 25% and led by strong disbursements, which were up by 68% YOY. So vehicle financing was up very strong, and even home loan growth was 38%, so very strong. And importantly, asset quality improved at stage three, which actually the NPA declined to 3.8% compared to 6.2% on a YOY basis, and provision coverage ratio now stands at 42% compared to 37%. Then Kansai, which reported decent set of results again, revenue was up 19%, gross margin almost flat at 29%, EBITDA margin expanded nearly, I mean, 5 basis point, which is almost flat to 11%. So this is like decent because we have seen that there was a lot of cost pressure in all manufacturing companies. So Kansai has managed to keep its margins constant despite that. And EBITDA growth of 20% was seen, and net profit growth of 19% YOY. And then on IT sector, we have seen that there is some small negative news that white collar hiring has gone below 50% in the October month. So this is slightly negative because generally there is a lot of hiring of if there is a lot of hiring from the IT sector, it is considered very positive. But I think the IT sector has slowed down a little bit. Lastly, some results today are important results will be Kajaria, Relaxo, JK Paper, and Gravita India. So these will be the results that will be monitorable. So that's it from me. Over to you, the retail team. Hi everyone. So a few more news updates from my end. So Adani Port has come up with a number. The profit has increased by 65.5% year on year, which is at rupees 1738 crores for the quarter ended FY23. So basically this is supported by top line and the operating income and the lower tax costs. So because of this, the revenue has surged by 33% year on year to rupees 5,211 crores for the quarter. So, and additionally, the cargo sectors group also for the quarter stood at 86.6 million MMT, which is a growth of 15% year on year for the Adani Port. After this, there's LIC Housing Finance. So LIC Housing Finance has clocked 23% growth, standalone profit of 305 crores for the quarter ended September FY23. The revenue from operations for the quarter grew by 8% to rupees 5,085 crores as compared to its previous year. NCC, the company has received two new orders of rupees 1,056 crores in October 2022. All these orders are related to water and environment division, and it's received from the state government agencies. So this might be some positive news for the NCC. Karnataka Bank, the bank has recorded a 228% year-on-year growth in standalone profit of rupees 412 crores for the quarter ended September 23. As there was a write back of provisions and contingents of 14 crores in FY23, so the net interest income grew by 26% to rupees 803 quarter on quarter, which is positive news for the
Karnataka Bank. One more update on Eicher Motors. The company has sold 82,235 units of Royal Enfield in October 22, which is up by 86% as compared to the same sold in the last month. So even the international business has sold 5,707 units of Royal Enfield in October this year, which was up by 62%. This should be a very good positive news for the Eicher Motors. Tejas Network, the company has received approval for manufacturing of telecom and networking products under designing PL Protection Linked Incentive Scheme. The company has committed to make a minimum cumulative capital investment of 750 crores over the scheme period. Chambal Fertilizers, the company has reported a 46% year-on-year fall in consolidation profit at rupees 274 crores for the quarter ended September FY23. The impact is been by weak operating performance as input cost and other expenses were significantly high year-on-year. So the consolidated revenue from operating grown by 92%, but then year-on-year it is 8,587 crore for the quarter. Grasim Industry, the company has said its finance committee of the board of directors approved issues of non-convertible debentures with a private placement up to rupees 1,000 crores in one or more tranches. So that's all from my end. I'll hand over to Hitendra for more India updates. या थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अदानी पोर्ट्स के रिजल्ट आए। अगर नतीजे देखी जाए तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 65.5% से, जो कि 1738 करोड़ का है ये क्वार्टर एंडेड में। और अगर देखा जाए तो उसका मेन जो रीजन है टॉप लाइन सपोर्ट किया है और लोअर टैक्स कॉस्ट के चलते रेवेन्यू देखा जाए तो 33% सर्च हुआ है 5,211 करोड़ का। और कार्गो से जो क्वार्टर में शुरू हो 86.6 MMT जो कि 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। सेकेंडली LIC हाउसिंग फाइनेंस के भी नतीजे कंपनी ने क्लॉक की 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इसमें जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है इनका 305 करोड़ का इस क्वार्टर में। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखा जाए तो 8% से ग्रो है जो कि 5085 करोड़ के आसपास का है। वोल्टास के भी नतीजे देखिए जब कंपनी ने कंसोलिडेटेड में नेट लॉस पोस्ट किया 6 करोड़ का। अगर उसके सामने देखा जाए तो 104 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था सेम या लास्ट क्वार्टर में। बट ये देख रहे थे इम्पैक्ट इसमें मेन प्रोविजन इन लोग किए हैं जो इनके ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के लिए है, उसके चलते लॉस पोस्ट दिख रहा है। और जो इनकी टोटल इनकम है वो 1883 करोड़ के थी, जो कि 5.5% की ग्रोथ दिखी गई ईयर एंड ईयर पे। कर्नाटका बैंक के भी रिजल्ट देखेगा। अगर रिजल्ट्स में देखे तो इनकी जो मैसिव 228% का जंप देखा गया स्टैंडर्ड प्रॉफिट में, जो कि 412 करोड़ का है। और इसमें देखा जाए तो जो राइट बैक का प्रोविजन किया कंटीजेंसी वो 14 करोड़ का है। NII भी ग्रो हुआ है 26% जो कि 803 करोड़ का है। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा है कि उन्होंने कंपनी 4.5 लाख मोटरसाइकिल सेल की है अक्टूबर 22 में। 17% डिक्लाइन देख रहे हैं 17% डिक्लाइन दिख रहे हैं अगर पिछले मंथ में। बट ओवरऑल की ग्रोथ दिख रही है लास्ट ईयर में अगर देखा जाए तो। आयशर मोटर्स के भी अगर देख रहे हैं तो उन्होंने 82,235 मोटरसाइकिल सेल किए जो कि 86% जंप दिख रहा है। जबकि अगर सेम अगर देखा जाए तो 44,000 उन्होंने सोल्ड की थी लास्ट मंथ में। और इंटरनेशनल बिजनेस में देखा जाए तो 5,707 मोटरसाइकिल का जंप देखा गया है जो कि 62% ओवरऑल ग्रोथ है। अभी हम देखेंगे टेक महिंद्रा के रिजल्ट। टेक महिंद्रा के नंबर्स देखेंगे तो सीसी टर्फ में 2.9% का ग्रोथ हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और लेड बाय 3.1% का देखे गया है। इसमें मेन जो है कम्युनिकेशन जो कि 2.8% से ग्रो हुआ एंटरप्राइज में। सो हमें लगता है कि जो कि डील वेंच फ्लो है Q3 में वो अच्छे दिख सकते हैं। और जो फर्दर फॉलोअप्स है Q3 की और माइक्रो हेडविंड्स यूरोप के उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए। सो करेंटली हम इसके ऊपर हमारी जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स है उसको डाउनवर्ड बाय 4% किए हैं 4 to 5% के लिए FY23 FY24 में। और कंपनी ने कहा है कि जो रिसेंट रनअप जो स्टॉक प्राइस में दिख रहा है तो बट उसके चलते हमने करेंटली इसको बाय से होल्ड पे ला दिया है 1175 प्राइस टारगेट के साथ 15x के वैल्यूएशन के साथ। ऑटो इंडस्ट्रीज के भी जो नंबर्स देख रहे हैं तो पीवी सेल्स में हमें सुधार देखा गया है जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। पर डिक्लाइन हमें मंथ ऑन मंथ में देखा गया है। इस सुधार के चलते दो रीजन है जो कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है वो ईज ऑफ हो रही है और जो एक्सिस्टिंग डिमांड थी उसको वो रिप्लेनिश कर रहे हैं।
सेकेंडली टू व्हीलर सेल्स में भी हमें डिमांड जो है थोड़ी और फर्दर वीकन होती दिखी गई, क्योंकि रूरल और अर्बन से डिमांड रूरल मेन रीजन है, अर्बन की डिमांड्स में भी ठीक है, रिकवरी हमें स्लो दिख रही है। और सीवी सेगमेंट में भी दिख रहे हैं तो डिमांड इंप्रूव हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि जो इकोनॉमी ओपन हुई है और फ्रीड मूवमेंट के चलते और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के चलते हुए। ट्रैक्टर सेगमेंट में देखी जाए तो सेल्स इंप्रूव हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और हमें लगता है आगे इंप्रूवमेंट भी अच्छी रहेगी मानसून के इसमें। चोला फाइनेंस के भी रिजल्ट देखेंगे, यूएम ग्रोथ देखा गया 25.2% का ईयर ऑन ईयर था वर्सेस 20.8% का। डिसबर्समेंट अगर हम देख रहे हैं तो ग्रोथ हुआ है 68% का ईयर ऑन ईयर पे। इसमें देखा जाए स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट है व्हीकल फाइनेंस में जो कि 38% हायर है, बाकी होम इक्विटी जो कि 38.3% हायर है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर देखा जाए तो इनका 18.3% से ग्रो हुआ है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट देखा गया जो कि करंट अब बाय 20.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो करेंटली 7.8% वर्सेस 8.1%। और ट्रिपल ओपी देखा जाए तो 17% है ईयर ऑन ईयर, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी देखा जाए तो 38% से देखा गया क्वार्टर क्वार्टर। पैट में हमें से स्लाइड से डिव्यू देखा कि 7.1 ईयर और 7.1% ईयर ऑन ईयर, इसमें बेसिकली हायर प्रोविजंस के चलते इसमें फॉल दिखेगी। एसेट क्वालिटी देखी जाए तो स्टेज 3 एसेट्स में भी डिक्लाइन दिखेगी जो कि 3.8% जो करंटली 6.2% था, और पीसीआर देखा जाए तो 41.5% है जो कि 36.5% है। ग्रॉस एनपीए देखा जाए तो ग्रॉस एनपीए में भी हमें सुधार देखा गया जो कि 6.3 से गिर के 5.8% पे आया। कंसर्नर के भी नंबर्स देखेंगे तो हेल्दी ग्रोथ दिखेगी ड्यूरिंग द क्वार्टर में, क्योंकि इसमें जो सप्लाई चैलेंजेस थे वो इशू रिजॉल्व हो गए। डेकोरेटिव पेंट डिमांड सबड्यूड था ड्यू टू एक्सटेंडेड रेंज के चलते हुए, बट रॉ मटेरियल प्राइसेस में सॉफ्टनेस की वजह से, करेंसी डिप्रिशिएशन की वजह से इन्हें थोड़ी इम्पैक्ट हुई है, उसका फायदा कम मिला है। कंसर्नर ने भी प्राइस हाइक्स की है डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल सीक्वेंस में, और भी डिस्कशन में भी है ओएम के साथ और इसे प्राइस हाइक करने के लिए। सो कंपनी ने अपना जो फोकस है वो प्रोडक्ट मिक्स और डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे ज्यादा करने वाली है, और करेंटली इनकी जो स्पेंड है उसे वे बढ़ाना चाहेंगी। आईटी सेक्टर में देख रहे हैं तो व्हाइट कलर होल्डिंग है, उसमें थोड़ा स्लोनेस दिख रहा है, 50% से कम ये हो रही है, तो एक थोड़ी सी स्लाइटली नेगेटिव न्यूज रहेगी इस सेक्टर के लिए। और हम देख रहे हैं कि राशन की भी हीरो मोटो का सॉरी आईडीएफसी बैंक ने कहा है कि इसकी जो बोर्ड मीटिंग है नेक्स्ट मंथ में करेंगे, वो कैपिटल रेज करना चाहते हैं। और इसके साथ yeah, so that's it from my end. Thank you for reading the morning call. You may now disconnect.